कुछ फैक्ट्स आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ। 94th रैंक है हमारी। कितने लोग भूखे रहते हैं पूरी वर्ल्ड में, उस हिसाब से इंडिया की 94th रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडियन आदमी कितना खुश है, हमारी रैंक 144th है। 144th। हम अपने आप को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कहते हैं, लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी। यूनाइटेड स्टेट्स आता है, उसके बाद आपका चाइना आता है, उसके बाद आपका जापान, फिर जर्मनी और फिर हम इंडियंस आते हैं। अरे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। रियलिटी फैक्ट ये है, अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो हमारी रैंक 145th आती है। अगर इंडियन आदमी एक साल में कितना पैसा कमाता है उसको पूरी वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी 145th रैंक आती है। ये रियलिटी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो हमारी 130वीं रैंक आती है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स देखोगे हमारी रैंक 111वीं आती है। When it comes to scam call centers, India is number 1. And right now, I'm sitting outside a scam call center. पर अब मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जितना मैं इंडस्ट्री में काम करता जा रहा हूं इस हिसाब से, कि आने वाले समय में हम एक ऐसे मुकाम पर, मोड़ पर आज खड़े हैं कि या तो 20-30 साल के अंदर हम एक्सट्रीमली वेल कर जाएंगे, या फिर 20-30 साल के अंदर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट पड़ेगा। और वो इतना स्ट्रॉन्ग हिट हो सकता है कि आपको जब वो पड़े तो हो सकता है बहुत मुश्किल हो वापस खड़े होना। But my concern is more of the engineers getting passed out from the universities, engineering colleges and prestigious engineering colleges, and they're still choosing to opt for the civil services. So apart from serving the country and all that, what is the real reason? Now that you are a member of the civil services, that is why I'm asking you this question. So the respect which is associated with the civil services, that attracts a lot of graduates, and engineering graduates are also, because of this, they are entering. The real question is, who even decided this? Do any of you even know why it works in the first place? Because the teacher told you? Because you saw it in your textbook? Because it allowed you to get the answer right on the test? There's a bit of a lesson here, by the way, before I show you why this is the case. Before I show you why it ends up with a paradox. Please don't ever do that. I know as a mathematician myself, I've done this for years. I've accepted rules and not known why they worked. If you accept rules and not know why they work, you're not a mathematician, you're a machine. And you're not here to become machines, right? There are machines that will do your job better than you, if all you're trying to do is be a machine. When you see a rule, don't accept it. Like, it's there for a reason, work it out. I will tell you why, and you want to pay very close attention. Why do we say that the square root of AB चीज हम कर लेंगे एक बार तो तब हमसे सवाल सॉल्व होंगे, तब हमारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तभी हमारे क्लासमेट्स, हमारे फ्रेंड्स हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें आके बताएंगे, हमसे टिप्स मांगेंगे, एंड तब जाके हमारे अंदर इंटरेस्ट, पैशन वाली फीलिंग जो है वो डेवलप होनी शुरू होगी। अब यार हम 11th-12th में 3-4 घंटे ट्रैवल करके स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे, वहाँ 6-6 घंटे की क्लासेस अटेंड करते थे, वीकेंड्स पे 12-12 घंटे की क्लासेस अटेंड करते थे। तो कितना ही इंटरेस्ट, कितना ही पैशन होता था हमारे अंदर जेई की तरफ। हमें यार इंटरेस्ट, पैशन नहीं देखना, हमें हमारा गोल देखना है। एंड गोल देखने के बाद भी जब हम जेई के बाद इंजीनियरिंग में आए तो 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब हम लगा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ही पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इंडियन अगर पेरेंट्स 145th रैंक, अगर हम एवरेज देखें हमारी रैंक आती है, पैसा हम कितना कमाते हैं और एजुकेशन पे आप खर्च कितना करते हो कॉलेज में? 5, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख। मेडिकल में तो और जाता है ऊपर। कोचिंग के लिए आप 3-3 लाख रुपए दे देते हो और उसके बाद जॉब नहीं लगती। कुछ ऊपर के कॉलेज छोड़ दो, जॉब नहीं लगती। इंजीनियरिंग की बात करोगे, पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से चलती है और इंडस्ट्री सिर्फ टेक डिमांड कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप नेटफ्लिक्स पे जाए, एक आईआईटी खड़गपुर के ऊपर टीवी शो बना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे। I had no info about what computer science is, what mechanical engineering is. All I knew is I liked math. That is why I went for engineering. Did you guys know what you wanted to study जब आप IIT गए थे? मेरी क्लैरिटी थी कि मैथ्स बहुत पसंद था मुझे। अच्छा। और आई थिंक 2 हफ्ते में समझ में आ गया कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं है। जो जिस तरह का मैथ्स यू प्रिपेयर एंड देन यू गो, वहां पे कुछ अलग ही है। मतलब मेरे 3rd ईयर में आई वाज प्रूविंग 1 is less than 2, प्रूव हाउ 1 वो 8-8 पेज के प्रूव होते थे। हमारा एक पेपर था रियल एनालिसिस का, उसमें हाईएस्ट गया था 30 में 2.5 पूरे क्लास। और ये वो लोग हैं जो मैथ्स प्रिपेयर करके आए। Look at an imaginary situation of a student who was very good, who gave JEE that day. Maybe something was not good for that guy. Instead of computer science, got some other discipline. So he's in a discipline but wants to study something else. But this is true. It's like an open secret, right? Like IIT is a badge of honor more than a metric of your competence in a particular field, right? Like if you can survive IIT, you'll survive the world. ये बात It's got nothing to do with the passion. उसके अंदर आपको पता चलेगा जो मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, केमिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए कंपनियां ही नहीं आ रही है। गिनती की कंपनियां आ रही हैं जो कुछ पैकेज दे रही हैं। टेक में उससे बहुत ज्यादा कंपनियां आ रही हैं और 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे दे रही हैं। तो एक ऐसा बच्चा, हमारे इंडिया में मेजॉरिटी बच्चों को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं होती, उसे जेईई का एग्जाम देना ही नहीं था। उसने इसलिए दी क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी, और जॉब में पैसा अगर टेक ज्यादा दे रहा है तो वो टेक की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, उसके मालिक आधार पुणे वाला, इन्होंने भारत छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए कुछ दिन के लिए। रीजन इन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्रियों, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों, अधिकारी तथा बड़े रसूख वाले लोग इनको फोन करके धमकी देते थे, और जिस वजह से ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और ये लंदन शिफ्ट हो गए। और इन्हें पत्रकारों ने पूछा कि आप इस बढ़ते कोरोना को ले किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप चुनावी रैली या कुंभ के मेला को जिम्मेदार मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसका जवाब देंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ये देश के लिए बहुत गलत बात है। कोई भारत का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे देश की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी, लोगों की जान की जिम्मेदारी होगी, वैसे व्यक्ति को अगर सुरक्षा कारणों से बाहर जाना पड़े और बाहर जाके वो ट्वीट करे अबे तेरी उम्र ही क्या है रे? दाढ़ी भी नहीं आई तेरे को अभी? 17, और इसके लिए दाढ़ी नहीं कुछ और चाहिए। अबे चुप। लीगल एज 18 की है, समझा? तेरे माँ बाप को पता है कि ये सब। और दूसरा कि आप किस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो। और ये पार्टनर वाली चीज अगर 50%, मैं आपको बोलूं आप घर से मदर डेयरी तक जाओ और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा बीच में, आधे चांस हैं कि आप मर जाओ, आप निकलोगे घर से नहीं। पर हम उन चीजों पे वर्क नहीं करते। हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर रिलेशनशिप पे ना चैप्टर है, ना सब्जेक्ट है, ना टेस्ट लिया जाता, ना पढ़ाने वाले लोग, ना फाइनेंसेस के ऊपर जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो नहीं। किस 4 चीज पढ़ाई जाती है? हमें तो वो चीज पढ़ाई जाती है कि हाउ टू मेक अ कोर्स सो दैट वी कैन चार्ज स्टूडेंट्स 20 to 25 lakhs. Why do you think is it important to talk about consent with children, and how do you think can we make it comfortable? Yeah, so first of all, I'd like to just tell parents that consent education is beyond sexuality.
If you only connect it with sexuality and sex abuse and all, then it becomes awkward and difficult. Yes. If you can talk about it from a non-sexual perspective, for example, when children start eating by themselves, from 6 months onwards, they are given solids. So, of course, there are techniques to make the child self-feed from 6 months itself. But say, for example, the parent didn't do that, and by the time the child is at least 1 year, the child has learned to eat by itself. But when the child says no, how many parents are actually listening to the child? Right. They still coax the child to eat more. They tell quite firmly that I know that you are not full and you need to eat more. How do you know whether the child is full or not? How can you identify the child's appetite regulation? What if the child is really full? Uncle, according to a survey done by a leading analytical Indian brand, 44% teenagers have sex before the age of 18. 42% teenage girls have sex between the age of 15 to 18, and in teenage guys, the number is 44%. And parents are fine with children having sex now. Back in 2005, the number was 25%. According to 2019 census, it's 48.76% parents are fine with premarital sex. Right. Only they can say, right? So the basics of consent itself is that you are the boss of your body and you know what is going on with your body. You can say no to any kind of touch or approach or unsafe behavior or anything that makes you feel awkward and uncomfortable. Right. So we are breaking that consent there itself. With that food itself, we are breaking consent. Similarly, okay, a particular dress that you don't want to wear. So you're telling, but the other person like, no, you have to wear it. Again, you're breaking consent. Or you're tickling the child. The child is telling no, but then you're still going on tickling. So consent is way beyond sex and sexuality. If we can take that effort to talk about consent from a general, normal perspective, then I think there will be no inhibitions or awkward feelings to discuss consent and boundaries. Only if we talk about sexuality or sexuality itself, there is no point getting shy or embarrassed or anything. It's everywhere. We have to talk about it. But still, because there is that taboo and stigma in the society, it will be good if people don't focus on sex and sexuality all the time while discussing consent and body autonomy. Get your facts right, uncle. Yeah, एक अल्ट्रा दिन का पैकेट दे. People I talked yesterday on Risomigal, they were saying they were afraid of Indians. I don't know why. This Perverts. really, because there are, I know I have like several friends who have done a lot of worse thing to ruin the country's name. So they are. I cannot say. I know that. Also, all Yeah, as you said, you cannot generalize about anything. You cannot generalize about anything. So not all are, but most are. Again, I would give this blame to my government only because the education system here is very bad, extremely bad. Nothing is taught properly, and that's the result. We as Indians need to fight these scam call centers. They are destroying our reputation around the world. When foreigners get these calls from these scam call centers, they begin to think that all Indians are like this. But it's not true. It couldn't be further from the truth. Indians are the most hospitable people in the world, hey na? हम धीरे धीरे
पॉज कर दो स्क्रीन 6 7 8 9 10 पॉज करके पढ़ लो 10 11 12 13 14 15 ऐसे बेकार रैंकिंग नहीं किए हैं, वही जो कहते हैं 4 रैंकिंग के आसपास 4 5 4 5 4 5 मतलब अगर जनरलाइज करोगे एवरेज लाओगे तो अराउंड 4.3 के आसपास जाएगा। ये लास्ट वाले में हम मतलब पहले लिख दें जनरल की बस हम वैसे जनरली सब कुछ अच्छा है लेकिन हम तब भी इम्प्रूवमेंट के लिख रहे हैं और ये 3 पॉइंट लिखे हैं कि असाइनमेंट्स आर वेरी मच फोकस टूवर्ड्स information gathering and mind automation and not on creativity and curiosity. Applies tourism and philosophy are integral in every field. The future of AI, but all we get is social skills for wisdom aspect. Not me, but my classmates also have encountered delays in mail replies. And फिर इसमें जो दूसरा वाला है वो स्पेसिफिक मेरे जो हमको सुनना है क्योंकि हम AI फील्ड में काफ़ी दिन से हैं तो वो नहीं थोड़ा अलग लगा हमको। और लास्ट में हम जो सुने पूरे जो 3 घंटा का 1 घंटा का जो पूरा मीटिंग हुआ था सब लोग कह रहा था मेल रिप्लाईज देर से आते हैं, अथॉरिटी से कनेक्शन डायरेक्टली नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, उसके ऊपर लिखें। और ये पहला वाला पॉइंट हम जो जनरली देख पाए असाइनमेंट करके जो SQL वाला था या तो जो जनरली हमको मिल जाता है। If you had both the responsibility and opportunity to best introduce the world of mathematics to curious and intelligent minds before they are shaped by the antiquated, disempowering, and demotivational education system of today, what would you do? Asking because I will soon be a father. First of all, let's just acknowledge that it's very weird for me to be asked a question that has anything with the flavor of parenting advice. Because, well, look at me, like I'm 27, what the hell do I know? But one interesting place to look here, if we're thinking, how do you make a child entering the world love math, or things related to math, is Richard Feynman's dad. So evidently, Feynman's dad was incredibly interested in making him into like a physicist or an engineer or something like that. And even when young Richard was just a newborn baby, he would paint these interesting patterns that were meant to instill young Richard's mind with a sense of mathematical patterns through the raw exposure. And as he grew up a little bit later, he would give these very deep, thoughtful answers to questions about how the world worked, or why when you like tug at a wagon that has a ball in it, the ball doesn't move. Feynman would tell all of these stories. They were some of his favorites to tell. You know, if I look back at my own childhood, there's definitely a lot of influence from a very attentive, thoughtful father in that respect. I think I said this in a previous Q&A, but I'll just say it again here. I remember these games where he would stack these sugar cubes in interesting geometric arrangements, and I would be asked to count how many there are. And you couldn't just straight up count because it was, some of them were hidden in certain ways, right? So you are effectively cubing numbers or something like that. And of course, if I got it right, then I would get one of the sugar cubes as this Pavlovian reward. And if you look at the success of someone like Feynman when it comes to problem solving, and I definitely don't view myself as like a great problem solver, but I do love the subject. I have this like deep-seated affection for it that probably is not unassociated to the kind of games my dad would play with me. It's not so much that I think, oh, the painting of those patterns really did instill young Richard's mind with a sense of math, or that the answers that his father gave to certain questions were the ones that made him deep and thoughtful later. I think it's just that when you're a parent and you're showing a lot of attention towards something, you're signaling to the kid that that something is important and it's worth thinking about. So all of the signaling that probably came from young Richard Feynman's dad showing this deep attentiveness to questions about the physical world, about mathematical patterns, probably made it such that young Richard would spend a lot of his own time thinking about those things because they just pattern match off of their parents. Another thing I might say is try to draw a distinction between school math and math, right? They can just be very separate things, and kind of separating the brand of those two can't hurt.